Why should I select Jaideep Pal? I need legitimate two or three reasons for the same. Why should I hire you? because sir I am a hard working and I am No, self you are not a motivated. hard-working सर man. मुझे और क्या क्या मुझे और सुधार करना चाहिए मेरे क्या क्या पढ़ना टेक्निकल में चाहिए जीरो और हो भाई। टीचिंग के लिए टेक्निकल में ऑलमोस्ट जीरो हो। ऑलमोस्ट जीरो। Hello Jaideep, a very good afternoon. Could you गुड please tell आफ्टरनून me सर something about yourself? Sir, my name is Jaydipal and I am from Devas. I am pursuing a BTech from Mahakal Institute of Science and Technology, Ujjain. And my university is RGP, PV, and my CGPA is 8.19. And my school 10th schooling is from MG Mission Higher Secondary School, Devas, and 12th schooling is from Kinder Higher Secondary School, Devas. And my project is movie search engines, and second project is weather search app. That's all about it. Okay, could you please tell me something about your family background and your soft skills as well? Sir, my soft skill is hardworking, teamwork, and my family. My father is working in a Vajra as a worker, mechanical engineer, and I have an elder brother is working in Walmart as Okay, D3 position. okay, great. In your skills, you have mentioned that you are good at HTML, CSS, Bootstrap, C, C++, JavaScript, React, Yes, sir. and C++. Firebase. You know the basics of Firebase, right? Yes, sir. Firebase. I use Firebase in a database. Okay. What is the difference between malloc and calloc? Sir, malloc is a memory allocation. For example, if you allocate a 20 byte memory, if we allocate up 20 byte memory, then this memory is used for malloc and sir, what Kellogg? Yes, what is the difference between malloc, MALLOC, and calloc, CALLOC? So it is under dynamic memory allocations. Kellogg is a memory and reloc is a memory, but I am not asking about realloc. I am asking malloc and calloc. Okay, leave. What is a null pointer in C? null pointer used to point a null value. For example, null value is mentioned in a stdlib dot header file is stored. Okay. So, suppose we declare a pointer of any type. Let us suppose integer type, or maybe float type, or maybe character type, or maybe void type, and I equate that pointer variable to zero. Okay, Now, will zero value be stored in that pointer, or will the pointer become a null pointer? null pointer. Okay, it will become a null pointer. Okay. What is dangling pointer? Dangling pointer means holds the inactive area locations. That's called a dangling pointer. Okay. Means Yeah. for example, int a equals to upper side int a int a upper side and int a under p equals to address of a, and after int main curly braces outside declare declare cout p, then output is the address of a but not value of a. Address is print but not value is print. Okay. What is an auto keyword in C language? Auto keyword is storage allocation. Auto keyword is default value is garbage and is used memory is RAM is used memory is RAM, and Okay. is declaring within a block, still in the block. Okay. Suppose we write n plus plus Okay. and n is equals to n plus 1. Both are one and the same thing only. Okay. You can write Yes, n sir. plus plus or n is equals to n plus 1. Which will execute faster and why? Sir, n plus plus is faster than n plus one. Why? Sir, because you use one, use n plus plus. Sir, What? sir, no, don't know. Okay. Is it possible to increment or decrement a pointer variable? Increment and decrement. Yes. Yes, sir. Okay. Great. What strcpy function is used for? Copy. Copy what?
strcp is used for copy the value element. Value and element. Okay, great. What are classes and objects? Sir, class is the factory of factory producing object, or we can say that class is a template, or we can say that class is a blueprint. For example, class is a car, and attributes are gear, brake, etc., etc. And object is a state. Object have a state and behavior. For example, dog has states. States, for example, uh, uh, his breed, age, size, and color, and his behavior is sitting, sleeping, barking, etc. This is the object. Okay. What are inline functions? So inline functions means inline function used to a single line of code. For example, cout a plus b. Its print is used in a single line of code. It's executed in a single line of code. Okay. What is the difference between private and protected access modifier? Sir, by default, private by default private type, but private and protected. Private is used exists in a class, and protected is exists in a class. I need the difference, not the similarity. What is the difference between private and protected? Yes. How many types of headings are there in HTML? Sir, headings H1, H2, H3, H4, infinity, S7, S6, X6, X7, X7, 8, X 100. Till 100. Okay. Um, could you please tell Whatever, me some? Could you whatever please tell you me use. something about your project? Sir, my project is movie search engine. In this project, we use HTML, CSS, JavaScript. With the help of API, we can fetch the data from TMTP API. And my movie search engine is very beautiful and attractive websites. In my if movie his rating is 500, then is a red color. If movie is rating 5 below, 5 is greater than, then my movie rating is yellow, and movie is 5 7 greater than 7, then rating is green. In Okay. movie search engine, So, yeah, yeah. Continue, continue. in movie search engine we saw a director name and a movie posters and all details of movie related. This available in my website. Okay. Uh, just moving to the next question. You have also mentioned a project on weather app, ping Yes, pong sir. game, and login page. Could you please elaborate them as well? Sir, weather app, in weather app we use API, that is Open Weather API. We create a open weather API website, then we log in and password set, then he has generating, and this will key copy in a JavaScript code, and uh, whether it is with the help of HTML, CSS, and JavaScript, and whether it is designs is very best. If we find weather Celsius and temperature, then for example Devas has type, then all the temperature and Celsius has show in our screen. That's the weather app. Okay. Uh, uh, just coming to few questions I'd like to ask. What is an event in React? No, sir. How list work in React? List What are forms in React? forms. Sir, Have you? forms is used in HTML. No, no. In React, I am asking. Have you made all the projects by yourself, or have you copied from somewhere? Sir, I made myself JavaScript, HTML, CSS, movie search engine, and a weather app. And a login page I self made. So, could you please show me the demo of any of your project Okay, sir. Sir, I mentioned a link, Netlify link. in your resume? Yes, sir. Resume mentioned. Okay, okay, okay. If I Okay, wait. I'll look into it. Okay, moving ahead. You also mentioned that you are good with HTML, CSS, React. Okay, so
React, I have asked a lot of questions, but you are not able to answer. Uh, suppose I have an array of size 100, right? And Okay. I have to, make a program, right? In this array of size 100, we can insert 100 elements from A to Z. We can insert a alphabet from A to Z. Okay, now we have 100 elements, and these 100 elements are nothing but alphabets from A to Z. Okay, so I give you an array filled with alphabets. You have to tell me the occurrence of each alphabet, like how many times A occurred, how many times B occurred, and so on and so forth. Sir, one time A, for example, A0 is a one time occur, and A1 is a one time occur. You are not understanding my point. I have an array of size 100. Okay, Okay. now in this array there are alphabets. Okay, suppose at a of 0 b is stored, at a of 1 y is stored, at a of 2 x is stored. Like Okay. this all the alphabets will be stored. Now there are only 26 alphabets, but we Yes, have sir. to input 100 alphabets because the size of the array is 100. So Huh. obviously there will be many alphabets which are repeating a N number of times. times. So you have to tell me which alphabet is occurring how many times. Sir, S- A, A is occurring 20 times, B is occurring 15 times, and so on and so forth, like this. sir, A, B, C, D, for example, 26 is A to Z is 26, फिर A to Z is 26, say 4 to 5 times. You are not getting my point. Okay, leave it. Uh, coming to your project, I just want to dive deep into the movie search engine which you have explained. What is the accuracy of that project? Like, can this project be implemented on a large scale for all the Bollywood and Hollywood movies? Sir, in my project, all the Bollywood and Hollywood movies trailers available in our movie search engine. Okay, and what is the future scope of your project? If sir, I add a login button and I upload it in a Google platform or website is host, then he will make sure you will receive your money. You promote our Google search in ads. Okay, could you please tell me the pillars of OOPS? So encapsulation, abstraction, polymorphism, inheritance. Explain them. Encapsulation means wrapping of module, data member and member function. Encapsulation is used for encapsulation purpose is for security purpose. Encapsulation means, for example, a medicine class medicine in under modules. For example, medicine into medicine name strings, and these two modules is in the class. That is data member and member function. And Okay. second is polymorphism. Polymorphism is made from Greek words. Poly means many and morphism means forms, whose meaning is same object but different behavior. In polymorphism, there are two types: compile time and runtime. In compile time, example is method overloading, and runtime example is method overriding. And abstraction, data abstraction. Data abstraction means refers to data abstraction refers to the unnecessary data hiding from the users and necessary data shown by the users. For example, if we go to ATM machine, press card and enter language select, then pin select if transaction is successfully. What under processes goes, this will not show. Only process is show what is the amount to type. Okay. Could you please explain me bubble sort algorithm? Bubble sort. In bubble sort, for example, five elements is inserted, 5, 6, 7, 8. We compare one, 2, 3, 4, 5, 6. Compare, then compare. If we have, for example, one phase, two phase, three phase, four phase. Is the four phase. If we have a five elements in array, A0, A1, A2, A3, A4. If your element inserted, then if your data, for example, if you have find 59, 59 is inserted before. If you have find 59, then passes is used. One pass, two pass, three pass, four pass. Compare. If we compare, then last position. If we arrange in ascending order,
then it will come a bubble show. Okay. How can we find the second largest element in an array? Suppose we have an array of size 5. Okay, 5 elements are in the array and I need to find the second largest element. How can we find the second largest element in the array? First we initialize array ARR 5. All this is done. I just want the core logic part. How can we find the second largest element? For ARR 0, ARR 5, ARR 01, A01, A02, A03, A05. This is the array indexing. And array 0 has, if we assume array 0 is the largest element, we compare ARR is greater than ARR 5. This is the logic. Okay. What is anchor tag and empty tag in HTML? Sir, anchor tag is used for website mention or email ID mention. If a Okay. website is put in a anchor tag href, then it will launch in a browser. Then if we click, then website is open. Okay. What is empty tag? Empty tag means inside input tag. Okay. What is T body tag used for? Tbody table row, Okay. In table body, CS, table body, tb what is table. the functionality of that T No, body tag? no, sir, no, sir. How to style heading separately and all together in CSS? Heading separately, if we apply h1 tag in css. Yes, yes, I'm waiting for your answer. Sir, if we apply H1 tag under curly braces, then we apply a heading tag separately. Okay, we have over 8 lakh aspirants, who have filled the form of TCS, and we have to select very few aspirants. Okay, Okay. in today's slot, I took more than 40 interviews, and I had to make a choice of two out of these 40. So why should I select Jaideep Pal? I need legitimate 2 or 3 reasons for the same. Why should I hire you? Because sir, I am a hard working and I am No, self you are motivated. not a hard working. Your technical knowledge is very, very low. In the 4 years, you have mentioned a lot of things in your resume, but I have asked you React questions, no proper answers, no proper answers in HTML, no proper answers in CSS, no proper answers in C and C++. How can you tell yourself a hard working person? Out of 40 candidates whom I have interviewed, your technical skill seems to be the least attractive. Any other reasons you want to justify for your selection? Sir, I am a self motivated and I am learning ability to learn new things as well as new technology. Okay, you have the agility to learn new technology. Yes, sir. Which new technology have you recently worked on? Sir, I recently worked not on, I learned a cloud computing and a React, but I in 2 to 3 months I learn a web development and a React, but I am not sufficient Okay, to learn. It is you have very, worked on cloud computing. So what no, is? no, Yeah, yeah. sir. I learn small things about cloud computing, how it works, because in lockdown I use the cloud computing. For Gmail example, uses Google, which cloud? Do you have sir, the Google, info? Google Cloud platform. Okay, Google Cloud. Okay, and what basically is infrastructure as a service, platform as a service? What, IaaS, PaaS. no, sir. Okay. Who is the CEO of TCS? Sir, Rajesh sir, Rajesh Rajesh. Gopinath sir, Gopinath sir, Rajesh Okay. Gopinath sir. TCS is present in how many countries? Sir, 55, 55, Okay. Any 56. recent achievements and rewards which TCS has acquired? Sir, Indian investment in France Award. This is, Okay. Tagline of TCS. sir, building of belief. Okay. Recently, one of our, ex-chairman died of a road accident, car accident. Could you please tell me the name of that person? Sir, Cyrus Mystery sir. Okay. Why do you want to join TCS?
because my dream company is TCS, because my inspiration is Ratan Tata, sir. Okay. Suppose you do not get a job offer from TCS, what would you do? Sir, I am if I am uh, not selected, I am very little disappointed, and I work on my weakness. Okay. What is the most important quality you believe a fresher must have? Fresher must have a best skill and a new learn things and a new technology have learn. Learning ability is the most powerful for freshers. Okay. And what is your favorite game? Sir, my favorite game is the GTA Vice City. Okay, GTA Vice City. Um, are you a regular learner or exam-based learner? Sir, I am exam based learner. Okay. Any three of your weaknesses which you feel might be one of the reasons for your rejection? Sir, I am feel uncomfortable when I am feel uncomfortable until I finish my work, Okay. and uh, I over prepare. No, sir, this is the Okay. Uh, I have basically asked for three weaknesses. You have said one, means you're not a good listener, right? Out of just a question, you are given a task to eat a watermelon. Okay, you have to eat a watermelon, and you have the choice of two watermelon. One is a circular watermelon, and the other one is a egg-shaped, oval-shaped watermelon. You have to choose any one. Okay, so which watermelon will you choose and why? sir. Circular watermelon is choose because he is sweeter than oval watermelon. Sweet than over. Okay, okay. Great. Suppose we give you a choice to select one out of these two, a team project or a solo project. What would you choose and why? So team project means a team. Team means a success of team. If we create a project in team, they can help each other. If we if we do a solo project, then we find many things and many difficulties that we have learned if we use solo project. There were many career objectives. What attracted you basically to IT industry? Because sir, I love to use the front end and other technologies, new technologies. I learn new technologies. Okay. Do you have any problem, like most of the time you have been residing in Madhya Pradesh, the center of India? So do you have any problem relocating to south of India or maybe west of India or east of India or north of India? No, sir, no, No. no Do problem. you have any shift related problem? Like, No, are you no, sir. comfortable working Yes, night sir. shift? Yes, sir. I am Do you comfortable. have any bond related problem? You know that TCS has a bond. Yes, sir. No problem. Okay. Okay. Any questions you want to ask to us? Sir, what technology that should learn as a freshers? That is decided after your training period based on the, result of your training exam and performance of your training. It's decided after that, not now. Okay, Okay. okay, So sir. we cannot say anything as of now. Okay. Thank you so much, Jaideep, for interacting with us. We wish you all the best. Your result will be Thank you, communicated sir. shortly via Okay. ईमेल। ओके। Thank you, sir. अभी अभी पूरा फीडबैक कॉल डिस्कस करेंगे, उस पर Okay, बात okay. करेंगे, फिर लास्ट में आपको टाइम देंगे क्वेरी के लिए। तो पहले ये बताओ, मॉक इंटरव्यू वाज लाइक वर्थ इट था या वेस्ट ऑफ टाइम मनी? सर वर्थ इट था। क्या लगता है आपको, इसके बाद आप टीसीएस का इंटरव्यू बेटर तरीके से दे पाएंगे या ऐसा है कि सर जैसा था वो तो वैसे ही रहेगा? नहीं सर, बेटर तरीके से दे पाऊंगा क्योंकि मेरे सी प्लस प्लस का बहुत सारा पढ़ा था, मतलब 50 60 70 80 क्वेश्चन निकाले थे, उसमें से मेरे को बहुत कुछ आपसे जो पूछा आपने, उससे मैंने थोड़े बहुत आंसर दिए हैं जो मैंने दे पाया हूँ। बाकी जो रिएक्ट वगैरह मैंने उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ा। मैंने प्रॉप से स्टेट है एंड दिस पढ़े कि रिएक्ट का यूज़ क्या होता है, एंड जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत कंडीशनल ऑपरेटर्स वगैरह, फॉर लूप, व्हाइल लूप क्या यूज़ होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी। मतलब मैंने अच्छा। डिटेल में नहीं गया हूँ, इसलिए मैं अभी आपको आंसर नहीं दे पाया इस कारण से। अच्छा, चलो। तो अभी मैं तो आपको फीडबैक दूंगा, लेकिन पहले आप अपने आप को फीडबैक दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है?
सर अगर मैं रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में अगर मैं अपने को फिट कर लेता हूँ, अगर मैं उसका अच्छे से कर लेता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं फिट हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है रेज्यूमे क्यों मंगाते हैं, लाइक एज एन लाइक इंटरव्यू क्यों लेते हैं? अच्छा, रेज्यूमे तो छोड़ो, इंटरव्यू क्यों लेते हैं? इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि ताकि लोगों को पहचान सके कि इसके अंदर क्या स्किल्स है और इसके क्या अंदर क्या क्वालिटी है। क्या क्या क्वालिटी? क्वालिटी है। तो अगर सिर्फ रेज्यूमे के बेसिस पे सिलेक्शन होना होता हाँ। तो फिर सबका रेज्यूमे सबमिट करके बोल देते ठीक है भाई, हम आपको बता देंगे आप फिट हो कि नहीं हो। सिर्फ यस। रेज्यूमे के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। यस और सर। रेज्यूमे के जो मार्क्स होते हैं वो उस पे नहीं होते कि किसने कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज लिख रखी है उसको उतने मार्क्स। आपने यस बोला सर। इंटरव्यू का पर्पस होता है एक इंसान की पर्सनैलिटी जज कर पाए। यस सर। आपके पास दो एम्प्लॉई आए, एक है यस। सच्चा ईमानदार, दूसरा है झूठा, आप किसको चूज करोगे? सच्चाई वाले जो सच्चा बोले। सच्चाई वाले को ना। अब आप यहाँ पर लिख रहे हो, आपने रिएक्ट में प्रोजेक्ट किया है। देखो, हाँ तीन सर। फेजेस होते हैं। एक तो है कि मैंने रिएक्ट पढ़ी है, चार फेजेस होते हैं इनफैक्ट। हाँ। एक होती है मैंने रिएक्ट पढ़ी है, हाँ। दूसरा होता है मैंने रिएक्ट में ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन किया हुआ है, हाँ। तीसरा होता है मैंने रिएक्ट में इंटर्नशिप की हुई है हाँ। और प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है ना? तो अगर आपने रिएक्ट पढ़ी है, आपको नहीं आती, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने रिएक्ट में ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट ले रखा है, फिर नहीं आती तो अनएक्सेप्टेबल है। आपने तो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के भी ऊपर का लेवल आपने लिख रखा है, आपने रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाया है। मेरे भाई, मैंने रिएक्ट में 3 सवाल पूछे थे। इवेंट क्या होता है, लिस्ट कैसे वर्क करती है, फॉर्म क्या होता है। ये किसी भी रिएक्ट की क्लास में तुम जाओगे, फर्स्ट डे पे यही सिखाते हैं। डॉम मॉडल के बाद यही बताते हैं इवेंट क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं। भाई, आप किसी भी चीज़ में प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो जब तक उसकी नॉलेज नहीं है? सर बेसिक बेसिक चीजें अगर आती डायरेक्टली, अब मेरी बात तो सुनो, अगर हैं। हाँ जी। डायरेक्टली आपसे प्रोजेक्ट ही बनवाना होता तो कंपनी आपको ट्रेनिंग क्यों देती? पहले 2 महीने ट्रेनिंग देगी ना कंपनी आपको, यस सर। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे डालेगी। बताओ। तो अगर आपने रेज्यूमे में कोई चीज लिख रखी है मेरे भाई, इंटरव्यू हैज ऑल द राइट टू आस्क एनीथिंग इन दैट। यस सर आपके रेज्यूमे। रेज्यूम को देख के मेरे को ये इमेज आ गई थी भाई, जयदीप ये है भाई, इस लेवल का। आए तो फुस्सू बम। यस समझ सर, रहे हो? जो रेज्यूमे में लिखा हो पूरा आना चाहिए, जो एक और एक वहीं वर्ड का आप चीज है। रेज्यूमे में कम लिखते तो ये आपसे उम्मीद होती और आप ये डिलीवर करते ना, दैट वुड हैव मेड अ डिफरेंस, आपका सिलेक्शन हो जाता। आप मेरे रेज्यूमे में देखना, मैंने 9 कंपनीज क्रैक की। आप तो मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स के स्टूडेंट हो, आप रेज्यूमे इंटरव्यू कोर्स में जाके देखना मेरा रेज्यूमे। ओके आप सर। बोलोगे यार इस रेज्यूम के बेसिस पे 9 कंपनी में कैसे सिलेक्शन हो सकता है? मैंने हर इंटरव्यूअर को ये एक्सपेक्टेशन देता है क्योंकि मुझे पता है सिर्फ रेज्यूमे से सिलेक्शन नहीं होता। आप अपने रेज्यूमे को कितना जस्टिफाई, सबने ये उम्मीद की और मैंने ये डिलीवर किया, इसलिए सब जगह मेरा सिलेक्शन हो गया। सर है बिकॉज तो यू ह्यूमन मेंशन। बीइंग ही भाई, जो इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ सर उसको सही। खुश करना है, बस इतना सा पर्पस है। तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके रेज्यूमे से देख के, आप उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, हो जाएगा काम। मेरे से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज वाले बंदों का रिजेक्शन हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ क्यों? क्योंकि मैंने कम बता के ज्यादा डिलीवर किया, उन्होंने ज्यादा बता के कम डिलीवर किया, बस इतना सा डिफरेंस है। समझो बात को। हम दोस्तों को देख लेते, अबे भाई तूने रेज्यूमे में ये भी लिखा वो भी लिखा, हम भी लिख देते हैं। अबे भाई, ये कंपटीशन ऐसा नहीं चल रहा है, आपको जस्टिफाई करना होगा। आपने इतनी सारी चीजें लिखी हैं यार अपने रिज्यूमे में, माय गॉड, 10 से 12 टेक्नोलॉजीज लिख रखी हैं और नॉलेज अपने को जीरो है। वो तो मेरा मजबूरी थी, आपने पैसे दिए हैं, मेरा काम था आपका इंटरव्यू इतना आगे तक चलाना। बट मैं ब्लैंक था कि मैं क्या पूछूं क्या चलाऊं, क्योंकि आपको किसी का आंसर नहीं आ रहा था। जिस चीज का आप आंसर दे रहे थे, वहां पे भी आप 2 मिनट में आंसर खत्म कर दे रहे थे, 1 मिनट में आंसर खत्म कर दे रहे थे। लॉन्ग आंसर्स दो भाई, विद एग्जाम्पल्स चीजों को एक्सप्लेन करो, इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करो। है ना? जब इंट्रो का मतलब क्या होता है, अपने बारे में बताओ, सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं बतानी होती है, अपना फैमिली बैकग्राउंड और सॉफ्ट स्किल्स भी बतानी होती है ना? ठीक है, अभी रेज्यूमे पे आ जाते हैं। देखो, रेज्यूमे में आपकी फोटो नहीं है, कॉलेज आइकन नहीं है, ये लगाना कंपलसरी होता है। दूसरा, जो आपने समरी लिखी है, किसी भी किताब में पहले पेज पे समरी होती है या आखिरी पेज पे समरी होती है? सर आगे। आपने अपने रेज्यूमे के टॉप पे समरी लिख रखी है। वो समरी नहीं है, वो करियर ऑब्जेक्टिव है जो ओके आपने लिखा करियर। है ना? और करियर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना लिखो, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ग्रोथ के लिए और ये सब चीजें। माय इंटरेस्ट इंक्लूड वेब डेवलपमेंट, क्लाउड डेवऑप्स। अगर मान लो नहीं है हमारे पास ये जॉब रोल, फिर
क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है हमको? ये चीज़ लिंक्डइन पे लिखी होती समझ आती कि वहाँ से स्टार्टअप कंपनीज़ आपको पिक करती हैं, है ना? प्लस आपने अपने कॉलेज की, स्कूल की लोकेशन लिखी नहीं है। अब मैं आपके रिज्यूम देख के मैं कैसे जज करूँगा कि ये बंदा नॉर्थ ऑफ इंडिया का है कि साउथ ऑफ इंडिया का है कि कहीं का है कि क्या है? ये जज करना ज़रूरी है, तभी तो मैं आपके रिलोकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाऊँगा ना, सर क्या मेरे को है ना? लोकेशन डालना चाहिए उसमें? बिल्कुल डालना चाहिए, ठीक है? उसके बाद स्किल्स आप चलो ठीक है आपने सही लिखी हैं, प्रोजेक्ट ठीक है, इंटर्नशिप कोर्सेज़ लिख रखे हैं भाई, है ना? अब आपने यहाँ पे इंटर्नशिप कर रखी है एचटीएमएल में, आपको ये नहीं पता एचटीएमएल में 6 टाइप की हेडिंग होती हैं। हाँ सर, 6 टाइप की होती मैं 1000 के ऊपर मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ और 300 से ऊपर मॉक इंटरव्यू में आराम से ये सवाल मैंने पूछा है कितने टाइप की हेडिंग होती है, एक बच्चे ने भी गलत नहीं दिया, कितना ही गधा बच्चा हो। आप बोल रहे हो कितनी भी टाइप की H1 से लेके H100 तक, इंटर्नशिप कैसे कर सकते हो यार एचटीएमएल में, आप बताओ? है। ये सर हुँ? वो 6 तक ही रहती है, पर वो मैंने भुला गया। यार अब ये चीज़ आप अभी जस्टिफाई कर रहे हो क्योंकि हम फीडबैक डिस्कस भी कर रहे हैं, टीसीएस तो आपको सीधा रिजल्ट देगा ना, आप समझ रहे हो? मैं ऐसे फीडबैक नहीं देता, आप सोच रहे हो कि आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए मैं बोल दूँ कि यार भाई ठीक है जयदीप मेरा स्टूडेंट है भाई, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सच्चाई बताना, आपका प्लेसमेंट कराना। अभी बुरा लगेगा लेकिन घर जाके मेहनत करोगे, जब सिलेक्ट होगे फिर याद आऊँगा मैं ही, कि यार भैया आपने सही चीज़ें बताई थी, आप नहीं बोलते तो। प्लस आपका 2 साल का गैप है ना? 17 के बाद 19 से स्टार्ट है आपकी डिग्री। नहीं नहीं सर, 17 10th स्कूलिंग एंड 12th अच्छा टू ऐसा थाउजेंड लिखा हुआ है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखो भाई। ओके ओके सर। पहले अगर या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले डिग्री लिख रहे हो फिर 12th लिखो फिर 10th लिखो, ठीक है? और सर फोटो वगैरह ये लगाना आपने है क्या कहीं बुक का मेंशन ही फोटो? नहीं कर रखा है कि ये 10th है या 12th है आपके। आप ये बताओ यार, ये आपका लाइफ है मेरे भाई, ये पैम्पलेट है, आप टीवी हो, आप बिकने आए हो, आपका पैम्पलेट ही अच्छा नहीं होगा कौन खरीदेगा? आपके रिज्यूम को देख के कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा क्या 10th है क्या 12th है, आप ये बताओ इसको देख के मैं कैसे जज करूं कि ये 10th है कि 12th है? एमजीएम मिशन हाइस, आपने स्कूल का नाम और नीचे सब्जेक्ट लिख रखा है, ये कहाँ मेंशन है सर कि मुझे 10th के साइंस बारे में लिखा और है, क्या बोर्ड है? अरे ऐसे नहीं समझ आता मेरे भाई साइंस और पीसीएम से, है ना? कम लिखने के मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं क्या? क्यों नहीं डिटेल में मेंशन कर रहे हो? आप एक बार मेरा रिज्यूम देखना, बहुत हाईली रिकमेंडेड है। प्लस प्रोजेक्ट में आपने लिख दिया, प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाई, लिंक है चेक कर लो, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है, क्या टीम साइज़ है, आपका रोल क्या है, आपका प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये सब चीज़ें भी लिखो। क्या ओके टूल्स आपने यूज़ किए, मुझे तो पता ही नहीं आपने इक्लिप्स यूज़ किया, कौन सी आईडी का यूज़ किया, कुछ नहीं पता मेरे को। हुँ? ओके सर। भाई आपको अपने सिलेक्शन के रीजंस बढ़ाने हैं, आप कम कर रहे हो। मान लो आपने इक्लिप्स यूज किया होता, बंदे में दम नहीं लेकिन मेरे को इतना पता है यार बंदे को इक्लिप्स चलाना आता है, टीसीएस में भी इक्लिप्स पे काम होता है, चलो यार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको ट्रेन करना आसान रहेगा। रीजंस जनरेट करो अपने सिलेक्शन के, जितना ज्यादा अपने बारे में बताओगे उतना अच्छा है भाई, तभी तो इंटरव्यूअर 20 मिनट तुमको दे रहा है यार, अगर सिर्फ तुम्हारी टेक्निकल स्किल देखनी होती तो एक एमसीक्यू पेपर रख लेता, लाखों बच्चों की एक बार में स्किल देख लेता टेक्निकल वो, है ना? और यस। ये जो नीचे एक्स्ट्रा लिखा है वो एक्स्ट्रा नहीं होता, वो हॉबीज लिखी हुई हैं आपने, तो हॉबीज हेडिंग डालो। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने कुछ मेंशन ही नहीं कर रखी हैं। प्लस आपने 8 सेमेस्टर्स क्लियर किए हैं कंप्यूटर साइंस में, आपने अपनी स्किल सेट में एक भी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं लिखा। कोई एक तो लिखो, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी आता हो, कोई एक सब्जेक्ट तो लिखो एटलीस्ट, है ना? 8.19 ये सर सीजीपीए पेपर आया, वर्क आपने एक भी लिखूंगा सब्जेक्ट नहीं उसमें। लिखा हुआ है तो ये तो नहीं काम चलेगा। उसके अलावा डिक्लेरेशन लिखना होता है नीचे कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है दैट इज टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, वो और सही नीचे फिर अपने साइन करने होते हैं उसमें, है ना? ठीक है, तो अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एक दिन के अंदर अंदर, उसको जज करना, उसको देखना एक बार, है ना? और एक बार दोबारा अपना रिज्यूम बनाना, ठीक है? और इंटरव्यू में भी टेक्निकल नॉलेज और वे ऑफ एक्सप्रेशन में अपने को सुधार लाने की ज़रूरत है। हाँ, अब आप पूछो क्या है। पूछना सर है मुझे आपको? और क्या 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 मुझे और सुधार करना चाहिए, मैंने क्या क्या पढ़ना टेक्निकल में चाहिए और ज़ीरो अगर हो भाई, टीसीएस के लिए? टेक्निकल में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो। टू बी ऑनेस्ट बुरा लग रहा है तो लगे,
बट मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए तो नहीं मैं नहीं नहीं ऑनेस्टली सर, बता रहा हूँ। सही है। नल पॉइंटर क्या है वो भी आपने सही से आंसर नहीं दिया। ठीक है, डैंगलिंग पॉइंटर का भी आंसर नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन है। इंटरव्यू में सिर्फ आंसर नहीं देना होता भाई, आपको पढ़ाना, एक्सप्लेन करना है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो जयदीप? आप नहीं हो, कंपटीशन आपको पता नहीं है। इसके पहले जिस बंदी का इंटरव्यू लिया था ना, उसने इतने फाड़ तरीके से समझाया, मैं क्यों लूँ आपको भाई? समझ रहे हो? सवाल तो सबसे वही पूछने हैं। सबसे पूछेंगे नल पॉइंटर क्या होता है, जिसने बेस्ट आंसर दे दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आंसर नहीं देना, बाकियों अच्छा। से बेटर आंसर देना, इस बात को समझो। अब हमको नहीं पता बाकी लोग कैसे आंसर दे रहे हैं, तो हमको तो सब कुछ बताना है। मुझसे नॉर्मलाइजेशन पूछा था टीसीएस के इंटरव्यू में क्या होता है। अब भाई कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन बता के आए होंगे, कुछ लोग टाइप बता के आए होंगे, कुछ लोग प्रोग्राम बना के आ गए होंगे या एक्सप्लेन करके आ गए होंगे क्वेरीज। मैंने नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो भी बता दिया, टाइप भी बता दिया, पूरी क्वेरीज लिख के भी बता दी, फ्यूचर स्कोप भी बता दिया, 4NF 5NF में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तक बता दिया। कहीं से कहीं तक कोई स्कोप नहीं। 15 मिनट में नॉर्मलाइजेशन समझाया, इंटरव्यूअर की फट के चार हो गई थी, भाई ये कौन है। दूसरा सवाल नहीं पूछा उसने मेरे से, और रिजल्ट आ गया मेरा 8 दिन बाद सिलेक्शन का डिजिटल प्रोफाइल पे। समझ रहे हो? जबकि डिजिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पूछते हैं, कोडिंग पूछते हैं, क्या नहीं पूछते। मेरी फटी हुई थी, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया था, मैंने कहा मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या आंसर करूंगा। लेकिन एक चीज मन में थी, जितना इंटरव्यूअर को सवाल पूछने के लिए तुम दोगे उतना तुम्हारा चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे आंसर से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, इसलिए बार बार अलग अलग चीजें तुमसे पूछ रहा है ना। मौके ही मत दो भाई। 4 साल क्या किया हमने, हम तो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आई नो सर आपने प्रोजेक्ट किया, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, टोटली रिस्पेक्टेड। लेकिन भाई टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनीज में तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि तुमको ट्रेनिंग देती है बकायदा। इनको जो चीज तुमसे निकलवाना है, जो चीज तुमको सिखाना है, उस पर ट्रेनिंग देंगी वो तुमको। तो तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस तैयार होना बहुत जरूरी है ना। सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी टीसीएस में जो मैंने अपलोडेड करा है तो वो उसको चेंज कर सकते हैं क्या इंटरव्यू के टाइम नहीं, पे? उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, अपना अपडेटेड रेज्यूमे, अगर वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है तो गूगल ड्राइव लिंक बना के ले जा सकते हो। अगर मान लो फिजिकल हो रहा हो तो ले जा सकते हो, बट इट्स देयर राइट। अगर उनको पुराने रेज्यूम को ही मान के करना है तो पुराने से के हिसाब से सवाल पूछेंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। यार दिन में 15-16 घंटे पढ़ो ना भाई, रिएक्ट पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग में थोड़ी ना पढ़ना, हर चीज का बेसिक बेसिक पढ़ लो, हो जाएगा काम। सी लैंग्वेज के 50-60 इंटरव्यू क्वेश्चंस देख जाओ तरीके से, C++ के देख जाओ, सारे कोर्सेज हैं तो सही है आपके पास। यस सर। मैंने कोर्सेज कम ड्यूरेशन के इसलिए बनाए क्योंकि प्रैक्टिकली कम समय में उनको फिनिश करना पॉसिबल हो, है ना। यस सर। ठीक है। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यश जैन सर। जा करके अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।